can you please tell me the procedure and the cost involved? Yes, of course, procedure explained by Claudia. Can you this question marks to be Claudia? Huh? Claudia here. Should I tell once again? Huh? Hello, Hello? Claudia. Hello, Claudia. Claudia, are you there? Yes. Okay. Claudia, our one participant asking he would like to open a branch office in Portugal. About what? He want to open a branch office in Portugal Okay. instead of new company. Can you explain little bit more about how to open a branch office in Portugal? Yes. Normally, I need the documents. They send me the passport, the tax number, and the all information about the company, about the activity, and the manager, if he married or not, and the address, and the money of the company, and the another things. When I receive all the documents, I prepare and request a document by online, and I send you after for signature. And when I receive, I would like to more clarify to Claudia, ma'am Claudia. If you want to really start a branch office in Portugal, so you need to be submit certain documentation related to your principal business. I don't know in which country you have your principal branch or the main branch or head office, you can say. And if you are really want to be extend your business, expand your business in Portugal, and you want to open a branch office here in Portugal, so आपको क्या करना होगा कि आपको उस कंपनी के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का सेट, राइट, कि किस नेचर ऑफ बिजनेस में आप वहां पे बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, बिकॉज ये मैटर करेगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ बिजनेस है उसके लिए पुर्तगाल में सर्टेन लाइसेंस ऑब्टेन करना, राइट। आपकी जो ऑनरशिप है उस ऑनरशिप से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट हैं, जैसे क्लोदिया ने कहा है, आपका पासपोर्ट, आपका ओनरशिप प्रूफ कि व्हाट इज द शेयर होल्डिंग इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस. इफ यू आर 100% शेयर होल्डर, so you need to be submit your shareholding certificate, and if you are part I Vikram, you are don't mute. understand all the same. Okay. Please pick another question. I think it's One clear. more thing, please. I need actually, I'm sorry, I Yeah. need one information regarding setting branch in Portugal. Yeah. Can you please give some idea about the cost involved? Sir, to set a cost branch? we will send you by email the cost, because you can open a branch office based on your present headquarter documents. You can bring the document from tested by the Ministry of Foreign Affairs in Portugal and send by email to the Claudia Mr. or Sunny, to our Mr. lawyer. Sunny, I would and we like to will- interrupt. I would like to interrupt. I would like to more clarify, because the cost of the business will be completely dependent of certain things, nature of business, right? If it's an import and export, if it is somewhere around manufacturing, is completely depend of the nature of business. और आप किस तरह से उसको यहाँ establish करना चाहते हैं, डिपेंड करता है. तो वो हम 1-to-1 डिस्कशन में दोबारा डिस्कस कर सकते हैं. अभी हम यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीजें पॉसिबल हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किस तरह से हम यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस कैसे टेक ओवर कर सकते हैं, इस बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं. बेटर होगा कि हम अभी कॉस्टिंग को साइड रख दें. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. Well, thank you so much. यू वेलकम सर. Mr. Shekhar, please ask your question. Hi, you're able to hear me? Yes, we are hearing you. Okay. The main concern, the question is related to the freelancing. Actually, me and my friend both are joined this call. We are both into IT professionals, more than 10 years experience, and we have the US visa and multiple countries visited also. So our question is like,
what is the success rate for the IT professionals in freelancing, and how many cases you have been successfully completed. Because most of the time, whenever we discuss with other consultants and other related to freelancing D2 visa for Portugal, most of them are not encouraging us. They're saying just come on visiting visa and get it done. Don't waste in this India. From India, it's not easy. you are So- actually it's a joke. Basically, जो भी कंसल्टेंट आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आप उनसे एग्जैक्ट डेफिनेशन समझें D2 कैटेगरी वीजा की, जो कि मुझसे बेहतर, बिकॉज आई एम द बिजनेस एक्सपर्ट, आई एम द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, जो मुझसे बेहतर कहीं आपको मिस्टर सैनी समझा पाएंगे D2 कैटेगरी वीजा की. मिस्टर सैनी, इट्स ओवर टू यू. सर कैन आई स्पीक इन हिंदी सर? हाँ, या चलेगा आपको. जी मैं बताता हूँ जी. आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आईटी की ह्यूज डिमांड है, नॉट ओनली इन पोर्चुगल, इवन इन इंटायर यूरोप. इट्स रियली, और स्पेशल आईटी एक्सपर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक, यहाँ पे गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर रही है उन लोगों के लिए, एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसको मैनेज कर रही है AIPE करके एक डिपार्टमेंट है, वो लोग मैनेज कर रहे हैं इसको. गवर्नमेंट ने प्राइवेट बॉडी एक बनाई है जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए इनकरेज कर रही है, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स है, स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम है, टेक वीजा प्रोग्राम है. आपके लिए तो वीजा कैटेगरी ही सेपरेट की है, इसलिए इट्स रियली डिमांड. पहली बात है कि जो आपका क्वेश्चन था कि डिमांड क्या है, हाई डिमांड है इनको आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए. अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास में है, आप आईटी सर्विसेज यहाँ डिलीवर करना चाहते हो, इट्स रियली इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन फॉर यू. वन. सेकेंडली, आपने बताया कि वीजा का जो सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल एंड डिपेंड ऑन योर रियल क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज. कि आप यहाँ पे आने के बाद एग्जैक्टली आपके पास में आईटी बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशंस है, आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस है, आईटी में कोई इनोवेटिव या कोई आपके पास में प्रेजेंट प्लान है जो आप पोर्टुगल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसर्न. नो मैटर वट एवर इन्वेस्टमेंट यू वुड लाइक टू मेड, और आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इन योर होम कंट्री, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स इन योर होम कंट्री, दिस इज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन योर वीजा एप्लीकेशन. आप ये लेके कहेंगे कि मेरे पास में खाली पासपोर्ट है, आई वुड लाइक टू स्टार्ट थिंग्स इन पोर्टुगल, बट यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, यू डू नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन इन द आईटी, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गेटिंग द सक्सेस रेट. अगर आप थोड़ा सा ये बताएं सर, हैव यू बीन यूरोप? आप पहले कभी यूरोप में आए? नहीं, यूरोप नहीं आए थे. कि कभी किसी कंट्री में और ट्रैवल किया? Yes, Middle East and Asian countries, and I have a B1 B2 visa, and my friend also, he on H1 visa. You have and there's a couple of H1 visa you holding from USA, and you have B1 B2 visa, business visa from USA. Yes, yeah, it's 10 years. yes, yes. Total qualification also into technical education and experience also more than 10 years of IT only. I cannot say it's 100%, but after seeing 2-3 points from your side, because I have a vast experience and having a long experience with the Portuguese consulate and with the Portuguese immigration system, since I was also landed in Portugal based on it's a similar D2 visa. So you will, if you will be present yourself with very proper manners, I think so you will get 99.9% visa success rate in your app. मेन सर हमें, क्योंकि मेरे दोस्त भी है, उनके तरफ से भी मैं पूछ रहा हूँ, दोनों हम ज्वाइन हुए थे. Mr. Sani, I would like to one more Vikrant, please hold. आप इनको सुनिए, please hold. जी. मेन कंसर्न यही है कि हम डायलेमा में है कि फ्रीलांसर और कंपनी एस्टेब्लिश में जाना है. फ्रीलांसर मींस अगेन द एम्बेसी इज आस्किंग, डू यू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द पोर्चुगल, डिड यू हैव एनी एग्रीमेंट विद देम. तो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इनको हमारे एंड से हम इधर बैठकर उधर कुछ नहीं कर सकते, राइट. सो ये डायलेमा में हम आपके पास आ नहीं पा रहे, वो क्योंकि दूसरे कंसल्टेंट से पूछ रहे तो D2 के लिए एंकरेज ही नहीं कर रहे हमें. तो एक्चुअली मैंने विक्रांत सर से भी 1-2-3 महीने पहले बात की मेरे हिसाब से. देखिए सर, अगर आप D2 के लिए जो अप्रोप्रिएट रूट है वो अडॉप्ट नहीं करना, देने की एडवाइस दे रहे हैं आपको, जो अप्रोप्रिएट रूट है वीजा के लिए, आप अगर विजिटर वीजा का रूट अडॉप्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट लीगल वे. ये तो कोई लीगल नहीं. आपके इंटेंशन यहाँ विजिट वीजा के आने के, घूमने के है, तो आप आके यहाँ रहना चाहते हो, रेजिडेंसी लेना चाहते हो, ये तो एक लीगल वे ही नहीं है. पहले इंटेंशन क्लियर नहीं है आपकी. और ऐसी सिचुएशन के अंदर में, और आप जैसी प्रोफाइल के लिए तो हम बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते. आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी क्रेडिबल प्रोफाइल है, आपकी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी क्रेडिबल है,
और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो आपने बताई कि यूएस का आपके पास में वीज़ा ऑलरेडी क्रेडिबल है, जब भी हम किसी फाइल को एनालाइज करते हैं तो मैं 3 से 4 चीज़ों को देखता हूँ कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उसका एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस क्या है, वो उसके पास में प्लान क्या है, वो करने क्या वाला आके यहाँ पे, वो जॉब करने वाला है या बिजनेस करने वाला है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या करने वाला है। दिस इज द 2-3 पॉइंट्स। उसके बाद में मैं आपको ये इंश्योरेंस दे सकता हूँ, ये ओपिनियन दे सकता हूँ कि आपको किस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। आपके केस में मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा। इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसा डिसीजन लेना है कि आप टूरिज्म वीज़ा पे आए, विजिट वीज़ा पे आए और आके यहाँ पे रहें और स्टक हो जाएं। सो वी हाईली रिकमेंडेड वेदर यू वुड लाइक टू कम ऑन फर्स्ट टाइम, आप विजिट पे आए, टूरिज्म पे आए, लेकिन अपने वीज़ा को एक्सपायर ना करें, आप वापस जाएं, वापस जाके अप्रोप्रिएट वीज़ा प्रोसीड करें और श्योरली यू विल बी ऑब्टेन दैट D2 वीज़ा एज पर योर प्रोफाइल। Okay, चलेगा so सर, हम one to I one would बात like to करेंगे। वन एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू। मैं आप एक एग्जांपल भी है और अगर आप लेटर हमारे से कन्वर्सेशन करेंगे, एक रीसेंट फ्रीलांसर वीजा ही हमने ऑब्टेन किया है यूक्रेन से। वो लड़के की पूरी प्रोफाइल हम आपके साथ प्रोफाइल ही डिस्क्लोज करेंगे, उसका जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि उसकी प्रोफाइल क्या थी, किस तरह का केस था, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह से एक इसी फ्रीलांसिंग स्ट्रेंथ के ऊपर में हमने कतर से वीजा भी अवेल किया है पोर्टुगीज कॉन्सुलेट से, तो उनकी प्रोफाइल आपको हम बता सकते हैं। यू कैन सी अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड योर सेटअप विद पोर्टुगीज कॉन्सुलेट। उसके लिए आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ आप मेरी हेल्प भी ना लें और किसी और कंसल्टेंट की ना ले तो भी आपको वीजा D2 मिल जाएगा, अगर आप अपना IT का प्लान ही एम्बेसी को दे दोगे और प्रायर 1-2 एस्टेब्लिशमेंट पोर्टुगाल में कर लेंगे, जैसे कि टैक्स नंबर बना लिया, बैंक अकाउंट खोल लिया, 1-2 ये करने के बाद ही एम्बेसी के पास चले जाओगे, दे विल बी कंसिडरिंग Mr. Saini, based on your business plan. Mr. Saini, I'm really very sorry. I would like to add on, which is a very important add on, and at that particular topic. देखिए, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी भी आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको अंडरस्टूड हो जाए। Yesterday on the Wednesday, एक पैक्ट साइन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट बिटवीन पोर्टुगीज गवर्नमेंट, स्किल्ड एम्प्लॉय, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड बिजनेसमैन के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए। जी बिल्कुल राइट। कल के डेट में एक कल ही पैक्ट हुआ साइन हुआ है जी। कि जिसमें के दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ओपन करने के लिए पोर्टुगीज टेरिटरी के अंदर, बिकॉज वी नीड रियली इमिग्रेंट्स who wants to really do the work here, not to get obtain residence permit only, right? So हम चाहते हैं, पोर्टुगीज गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग वाकई स्किल्ड हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो यहाँ आए, उनको 100% यहाँ का स्टेटस मिलेगा, बट वो क्लॉडिया इस से थोड़ा इंटेंशन के साथ आए कि वो काम करें। और इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक पैक्ट साइन कल हो चुका है। Now I'm going to be over to Mr. Saini as well as Ma'am Claudia. Ma'am Claudia can also explain that particular point also. Ma'am Claudia, are you there? Hi, what you say? I was saying about the pact between Indian government and Portuguese government for the skilled worker yesterday, which was signed. About पता, what? क्लॉडिया को नहीं पता होगा उसके बारे में Okay, शायद। I think she is not Claudia aware के about scope that. से out है because she's a legal advocate. Claudia, let me Claudia, can you if person is not here in Portugal, is it possible he will get the tax number of Portugal and the social security number of Portugal? Can you little bit explain about that? Yes, it's possible. What's the country? India? They are Indian. India. Yes, it's possible. In this case, normally the finances request a document, a declaration, explain the person don't stay in Portugal. I don't listen. I didn't listen. No problem sir, हम next week 1-to-1 discuss करेंगे ये कॉल के बाद। next week we'll have a individual session on this. Yes, please. Okay. Thank you. Okay, Mr. Shekhar Reddy. Well, Mr. Claudia, Miss Claudia. Yes, please, Mr. Please, sir, Vaneet ji, please, you raise your question. Yeah,
Actually, to start any business or services in any of the region of the country or part, we need to have a marketing survey before submitting the business plan. So, is there any possibility to come over there to have some marketing surveys so that we can prepare the proper business plan for the D2 business? Yes, it's possible. You can explore the country while business and visiting visa and come here and get marketing survey here inside of Portugal. There is no Portugal authorities and Portugal embassies always welcome like such type of things. There is not an issue. You can come physically if you would like. You would like to come for the visiting visa or tourism visa and explore the market. Yeah, it's right. Yeah, for the visiting visa, we will be able to let them know we are coming there for marketing survey and to start some services over there. Or we have to mention we are coming to just for the tourism purpose, and side by side we can do that. No, it is visiting visa and business visa always proceed once you have an invitation from the Portuguese any of private person or company. Then you can proceed the business visa or visiting visa. You have a conference, you have a meeting there, you have some particular destination where you are going. If there is no any defined things, then you can proceed a regular visit tourism visa only. And what kind of licenses we required for the ITC consultancy over there? For the IT consultancy, you don't need any special license. You can just create a company. Should be registered with the tax authority, should be registered with the social securities, and you can start consultancy business. But if you would like to manufacture some IT subjects or some software, may you require the license. But in standard form, you don't need any license for providing consultancy services regarding the IT or financial. I'm sorry, Mr. Sani. He talking about certain special platform on the IT services like cyber security? No, in general consultancy. It can be anything. It can be anything, not just the cyber security. Yep. It can be. So there are certain different IT fields. communication. Yes. There is no need of any kind of a special license. Okay. There is no need of a special license. It's completely depend on your capability and your caliber. That if you will prove that I can provide the consultancy in certain IT field, like in programming, right, like in software development. If you there is no requirement of any special license. Please move to the other question. Nandi. Yes. Mr. Sini, can I speak? Please, just give me a second, please. Yes, Mr. Adan Pala. Please ask your question, Mr. Adan Pala. Hi, good evening, Crown team. Yes, thank you. See, I'm doing a trading business in Poland, in India, and Dubai. Okay. Now, also, I wish to start a freight forwarding company in Portugal, which is already I'm doing business in forwarding business in India and Dubai. So, is there any possibility to start the freight forwarding and trading business? Yes, there are possibilities. You can just open a branch office here in Portugal, and based on a normal company, you can do activity which you already doing there. And maybe there are certain permissions and license for doing such type of business. Then you need to take that license from the relevant authority. And it's quite easy, and it's only one window shop here in Portugal where you can obtain that license in 1 or 2 working days, and to do your activity, whatever you're already doing in their home country. Or okay, fine. In Poland, already I have a trading company which I need to purchase the goods from Polish local market and sending to Africa. So same way, I need to open a branch office in Portugal. Yeah, you can open a branch office, and based on that, you can avail things, or you can get an opportunity here in Portugal. There is not an issue. It's quite easy and fast. Yeah, the third question is, I'm just trying to landing with a D7 visa. Okay. So I'm eligible to do any business over there once I landed. Yeah, if you have a D7 visa still, you should be registered with the tax authority and social security again. And again, and you are eligible to do any commercial business. But there is a difference between taxations, which income you generate from Portugal, it is a taxable. And the D7 visa means that you do not have a tax in Portugal,
since you only on the foreigner income. For example, you have income in Poland and sending to Portugal, and you have income in India and sending to Portugal. D7 visa is, there is no any kind of tax on that. But if you already registered here in Portugal and generating some income in Portugal, you are under tax regime, you have to pay social or tax in Portugal. Yeah, obviously. But the thing is that if I'll come there, I need to open, I have already have a NIF number for D7 visa. Now I need to open a bank account and the tenancy contract. I don't know how to proceed for this. Can Claudia will explain. Is it Claudia person is not here? He have posted his tax number. He would like to open a bank account. How is it possible opening bank account in Portugal if person is not here? It's possible if he sign a power attorney and send the original documents by postman, for example. Okay. What kind of original documents? Let me explain the subject. In this situation, we have experience. If you are not here in Portugal, you have to request by online to the Portuguese banking institution, Millennium Bank or any other banks, and they will accept your request and fill your application form online and send to you. And you have to sign that document and send by post that particular document here in Portugal. And the lawyer, for example, Claudia will authenticate your signature by webcam on the video conference, authenticates your signature. After that, original form sent to the bank by post. Then your account will be opened. Or another way, bank will send the original form to your home country or resident country, and you bring this form signed front of the Portuguese consulate, that form, and send original document to the bank, and your account will be open here. Yeah, but it's already having account with the Poland Millennium Bank. I was taking the help of them, and they told me to apply online. When I am trying to open online, the local address they're asking in the system, which I don't have, because that means the tenancy contract must be I'm there. sorry to interrupt, Mr. Adan Para. I would like you to please, if it's possible, can call us. We will discuss this matter personally, because this is getting more personal matter. Yes, it's more personal and more specific matter. It's easy and it is possible to open while sitting in Poland, since Poland having the Millennium Bank and Portugal also having the Millennium. It's quite easy and possible. We already have experience, and we already open since it is in UK as well. Yes, please. Yeah, thank you so much. And where I can contact your office here in India? Okay, thank you. And the next question from Mr. Mohammed Sharifud Zaman. Please ask your question. Yes, thank you for opportunity. Give me the opportunity. Just I wanted to know the export-import related business. How is the opportunity in Portugal? Number one. Second is that I wanted to ask, if I wanted to open, I'm not now in Portugal, but if I wanted to open an export-import private limited company with 2 persons, how many days it will take for the company opening formation, and as well as for if I want to apply for, because I'm now in Bangladesh, if I wanted to apply for visa process, how many days also will take? This I also wanted to know, please. Mr. Vikrant. Export-import company, big round. Just give me a second. Sir, if you can tell him about the company procedure stuff, Mr. Vikrant will come back. He's a bit busy. Okay. So, let me give you the presentation, how to create a company in Portugal. I will just give you the presentation, then we will take your question. First, one question we will take, Mr. Giri would like to ask something. Then I will go to the presentation of company, how to create a company or how to become a freelancer in Portugal. I just go to that presentation. So, Mr. Giri, please. हेलो सर, थैंक यू सर. कैन आई स्पीक टू हिंदी सर? जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर. सर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इंडिया कोलकाता से हूँ जी. मैं पुर्तगाल के लिए अगर वीजा अप्लाई करना है, मैं को भी चाहता हूँ कि सर बाहर आके कोई जॉब करूँ जी. मेरे को सर या ड्राइविंग या कोई भी अदरवाइज कोई भी अगर जॉब वर्कर में भी लग जाए. सॉरी मिस्टर गिरी, ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो सेशन है हमारा एक्सक्लूसिवली एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट्स के लिए है. और वैसे भी हमारी कंपनी जो जॉब प्रोजेक्ट्स में हम लोग डील नहीं करते हैं, जॉब्स के लिए हमारे पास कोई बेहतरीन इंफॉर्मेशन नहीं है.
तो सॉरी, इसके लिए हम आपको जॉब के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फ्रीलांसिंग स्टफ के बारे में या इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वी आर हैप्पी टू आंसर सर। प्लीज सॉरी, रिगार्डिंग जॉब वी आर अनएबल टू आंसर सर। Thank you, sir. Okay, so the next question Please. will be from Mr. Naeem Murshid Qazi. Please ask your question. Mr. Naeem Murshid Qazi. Please. Yeah. My question is, I am a risk professional. I am working in the bank as a risk professional for the last 14 years. And I am also a trainer on the same subject. I studied in the Finland in Swedish School of Economics. I was in Europe for some times. So now my question is, under the freelancer, will my profession will suit this type of visa? Can you please clarify? It is possible if you are providing such services in the European market, you would like to provide such services in the European market, or after sitting or after residing in Portugal, you would like to provide the services in worldwide. It is possible you can proceed. You can proceed this type of visa, since as per your qualification and experience, as well as your travel history makes credible, or you can proceed the visa, subject to you should be registered here. You should be pay social contribution and tax to the authorities, and you should be find some solid clients or business plan. Based on that, you can put a request for D2 visa, because D2 visa are not so hard if you already have your operation is already executed in Portugal. But D2 visa is really hard if you do not have any existing activity in Portugal. So we always recommend to the applicant who have a normal profile, not having a very solid business plan. We always recommend first you should be start your activity in Portugal, generate some revenue for you, pay some social contribution, then apply D2 visa. The most of people think first we apply the visa, then we start something. What we recommend, if you do not have very solid business plan, of course you can apply. If you have a solid business plan, you are an IT background, you have a special innovation project would like to implement in Portugal, you can proceed without anything, without any registrations, without any freelancing stuff registrations, you can proceed that. But if you do not have credible profile, credible business plan, then first start your operation in Portugal while sitting abroad, while as a remote worker. Okay, but the thing is that in my case, I think there are the two scenarios. Number one scenario is that, okay, I can find a job as a banker, but which seems very tough. The job yeah. is not concerning possible with the D2 visa. Yeah, it yeah, is not I know possible. that. Also, it is also Yeah. not concerning with the D2 visa. Yeah. So the second option is I can work there as an entrepreneur, like a risk consultant or a trainer. Yeah. So in that case, I mean, how can you help me? Because will they give me the visa first to go there and